Hello. Okay. So good morning to all of you. Good In morning, the sir. last class, I had discussed that means the jet transform of some standard function, that means for unit step function, ramp function, sinusoidal function, exponential function, polynomial function, and cosine function. And I have uh, uh, shown you a formula table for jet transform, and we have compared the jet transform of discrete with the Laplace transform of continuous signal. So how they are correlated to each other. And now today's topic is property or theorem. So like in the Laplace transform, so there is some shifting property, linearity, multiplication of a constant. So in the same way, a jet transform have their property for any discrete time signal. So first theorem or first property of a jet transform is multiplication of a constant. Hello. Okay. So multiplication of constant, suppose xt is any signal and x capital xz is a jet transform of xt. Then suppose any constant a, if you multiply any constant a, that means the jet transform of a into xt is equal to a into jet transform of xt, that means a into jet xz. That means if you know the jet transform of xt is equal to xz, then you can directly write down the jet transform of a into xt is equal to a into xz. Okay. The proof for this theorem or property is that suppose a signal is axt, or you can say axkt. In discrete time signal, t is replaced by k into t, where t is the sampling period. Then from the basic formula of jet transform, jet transform of a into xkt is equal to summation from k is equal to 0 to infinity a into x kt into z to the power minus k. So as a is not directly associated with the summation formula, then you can keep a outside from the summation formula. Then the jet transform of a into x kt is equal to you can say that a into xz. Okay. So next for property of jet transform is linearity property. Okay, just like in Laplace transform. Okay, so suppose you have two discrete signal fk and gk, and you know the fk jet transform of fk and zk is fz and gz. Just wait. Yes. Then you suppose a new signal. Suppose you have a two discrete signal fk and gk, and the new signal is a combination, linear combination of fk and gk, where alpha and beta is any constant. Suppose the linear combination of fk and gk is equal to xz is equal to alpha fk plus beta gk, where alpha and beta are any scalar quantity. Okay. So then
then you using the linearity principle, you can directly say that the Z transform of xk is equal to alpha into capital Fz plus beta into capital Gz. Okay, so this theorem indicates that if there is a combination of linear combination of any signal that's in individual Z transform, you know, then you can directly say that the Z transform of linear combination of those signal is equal to xz is equal xz is equal to alpha into fz plus beta into gz. So the proof of the linearity principle, suppose if you want to know the Z transform of xk, then you know the xk is equal to alpha into fk plus beta into gk. Then from the basic formula of Z transform, that means the summation start from k is equal to 0 to alpha, and xk is replaced by alpha fk plus beta gk. So you can say that the xz is equal to summation from 0 to k is equal to 0 to infinity, and bracket start alpha fk plus beta gk bracket close into z to the power minus k. Okay, so as from the multiplication theorem, you can separate alpha and beta out from the summation formula. Then then xz become alpha into summation from k is equal to 0 to infinity fk into z to the power minus k plus beta into summation k is equal to 0 to infinity gk into z to the power minus k. So as you know, the Z transform of Fk is equal to capital Fz, and Z transform of a small gk is equal to capital Gz. Then you can directly say that the Z transform of alpha Fk plus beta gk is equal to alpha into capital Fz plus beta into capital Gz. Okay. So you can directly put formula using the linear combination of the signal. So third property of the Z transform is multiplication of AK. Okay, so suppose any signal xk whose Z transform is xz, then Z transform of a to the power kxz is given by Z is replaced by a to the power minus 1 z. Okay. Hello. So the property of multiplication by a k say that suppose z transform of xk is equal to xz, then the z transform of a to the power kxz can be given by x a to the power minus 1 z. That means z is replaced by a to the power minus 1 z. This property is called multiplication of a to the power k. So how can you prove that? Proof of this theorem, suppose if you want to find the Z transform of a to the power kxk, then from the formula summation start from k is equal to 0 to infinity a to the power k xk and z to the power minus k. Now a to the power k and z to the power minus k is in the have the same power, so you can take the power as a common factor. Then formula becomes z is equal to k is equal to 0 to infinity xk a to the power minus 1 z to the power minus k. That means simply if you know the z transform of xk, so if you want to find the z transform of a to the power k xk, then simply replace z by a to the power minus 1 into z.
Okay. Any problem? Hello. No, sir. Any problem? समझ में आ No, रहा है? sir. Yes, sir. Okay. So we have discussed three No, sir. property. First, multiplication. Third one, second one is linear theorem, linear combination of signal. And third one, if the signal is multiplied by a to the power k. Fourth theorem is shifting theorem. Okay, shifting theorem. Just like in Laplace transform, suppose xt have a Laplace transform is equal to xs, then xt minus what is the Laplace transform of xt minus a? Hello? Hello? हाँ सर, e to the power minus as. Minus as into a, yeah, we have to multiply e to the power minus as. In the same way, a shifting theorem, that means is applicable in a Z transform. So shifting theorem presented here also refer as a real transformation theorem. Okay, it's also called real transformation theorem. So suppose xt have magnitude 0 for negative value of t, and xt has a z transform is xz. That means xt is only valid for a positive value of t. Then x of t minus t into capital T is equal to z to the power minus 1 into xz. Hello, this is called delays this called delay time delay theorem. समझ में आया या नहीं आया? Suppose xt or xk whose z transform is xz, if you delay the signal, time delay the signal, that means suppose if you want to find the z transform of x t minus n into capital T, where what is capital T? Capital T is the sampling period. Then z transform of x t minus n t is equal to z to the power minus n into x z. Any problem? And for time advance or for the left shifting of the signal, what do you mean by xt minus nt? Is the right shifting or left shifting? So right shifting. Right shifting, that means suppose if the signal start from if the signal start from t, that means k is equal to 1 0 1 2 3 4, and suppose if you want to find the z transform of x t minus 5, that means signal is start from k is equal to 5. Okay, that means it's called right shift. And for the time advancement, so suppose xt have z transform capital xz, then z transform of x t plus nt is left shifting is equal to z to the power n xz minus k is equal to 0 to n minus 1 x kt into kt into z to the power minus k. What do you mean by this formula? So please, if you go through the proof of this formula, so for a right shifting or time delay system, suppose if you want to find the z transform of xt minus nt, where nt where t is the sampling period, then formula is equal to, from the basic formula, summation k is equal to 0 to infinity x
and small t is replaced by k into t minus nt into e to the power minus k. Okay, so if you multiply z to the power minus n in both sides, then if you multiply e to the power minus n and into e to the power plus n, then the formula becomes z to the Sir, power sir. minus n. हाँ बोलो सर ये सर ऊपर वाला जो लिखा हुआ है सर, सेकंड लाइन में सर एक्स के टी कैसे हुआ सर? ये यहीं पे है। यस, टी जो है वो टाइम पीरियड में है, मतलब तुम्हारा वो कंटिन्यूअस मोड में है। तो जब भी डिस्क्रीट सिग्नल आता है, डिस्क्रीट सिग्नल ऑलवेज रिप्रेजेंट आइदर एक्स के टी where k is variable. In continuous time small t is variable and in discrete time k is variable. Suppose if you put k is equal to 0, that means signal magnitude for a t x is equal to t is equal to 0. If you put k is equal to 1, that means signal magnitude at x t is equal to small t is equal to capital T. Okay, just wait. Just wait, I want share whiteboard. Hello. So I think you have some doubt on the small t and just wait. X, suppose you have signal xt. Okay, so suppose we have signal xt in time domain, that means in the continuous mode. So just wait, suppose we have a magnitude okay. So okay, suppose यहाँ पे हमारा suppose कोई एक सिग्नल है. ओके, ये तुम्हारा यहाँ पे इन x एक्सिस t and y एक्सिस suppose is called x t. So ये this is in the continuous mode. So you can say that suppose signal, suppose signal start from t is equal to 0. suppose ये तुम्हारा इस सिग्नल है. ओके, सपोज ये तुम्हारा कंटिन्यूस टाइम में सिग्नल है. सो जब हम इसको डिस्क्रीट टाइम में रिप्लेस करते हैं, सो नाउ x is called k into t. Okay, so k into t means suppose t is called capital T is called sampling time. What do you mean by sampling time? What do you mean by sampling time? That means at a fixed interval of time, we are getting a magnitude of signal. If you put t is equal to 5 seconds, that means after each 5 interval, you are getting the magnitude of a signal. If you take t, capital T is equal to 1 second, that means at every 1 second, you are getting the magnitude of the signal. Okay, so where k small t is replaced by k into t, t is the sampling period. It depends on the type of sampler you have used, and you have to fix the sampling time. So suppose if you take the
just wait. If you take now, okay, so here k is equal to suppose 0, suppose k is equal to 0 है ना, k is equal to 1, okay, so k is equal to 2, k is equal to 3, यहाँ पे सपोज k is equal to 0 आया, तो k is equal to 0 में सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना है, so 0 है, so एक 0 मैग्नीट्यूड का आएगा, and suppose if you are taking the t is equal to 1 second, so next डेटा हमारा कहाँ पे आएगा, t is equal to 1 second में सिग्नल का मैग्नीट्यूड जितना होगा वो तुम्हारा t is equal to कैपिटल T, अगर मान लेते हैं कैपिटल T क्या है, सैम्पलिंग पीरियड है, सैम्पलिंग पीरियड का मतलब हुआ कि कितना इंटरवल के बाद डेटा हमारा आएगा, ओके, अगर हम t is equal to 1 सेकेंड रखते हैं तो डिस्क्रीट टाइम में पहला सिग्नल कब आएगा, स्मॉल t, जब स्मॉल t is equal to 0 होगा, सो उस समय हमारा मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा, ओके, सो नेक्स्ट डेटा कब आएगा, एट t is equal to कैपिटल T is equal to जब 1 रखेंगे, दैट मींस स्मॉल t is equal to 1, सो 1 सेकेंड में सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे यहाँ पे जो सिग्नल का मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ओके, नेक्स्ट डेटा कब आएगा, k is equal to 2, k is equal to 2 into t, सो सैम्पलिंग पीरियड हम लोग कितना रखे थे, 1 सेकेंड, तो नेक्स्ट डेटा कब आएगा, t is equal to 2 सेकेंड में, तो सपोज नेक्स्ट डेटा t is equal to 2 सेकेंड में हमारा ये आया, नाउ k is equal to 3 रखेंगे, तो k is equal to 3 रखेंगे, तो नेक्स्ट डेटा कब आएगा, नेक्स्ट डेटा कब आएगा बताओ, जब स्मॉल t इक्वल टू 3 into t के बराबर आएगा, व्हाट इज t, t इज द सैम्पलिंग पीरियड जिसका वैल्यू हम लोग 1 सेकेंड रखे हैं, तो नेक्स्ट डेटा कब आएगा, 3 into 1, दैट मीन्स t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आएगा, तो 3 इक्वल टू 3 सेकेंड में जो भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, सो जैसे इन टाइम डोमेन t is a variable, in the discrete time small t is replaced by k into t, capital T, where capital T is the sampling period and a small k is variable, that means its value vary from 0, 1, 2, 3, 4, that indicates at every interval of every sampling time you are getting the magnitude of the signal, okay, hello, यस सर, वो सर समझ गए, ओके, ये डिस्क्रीट सिग्नल इसी तरह से हम लोग को मैग्नीट्यूड मिलता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड मिलता है, ओके, सर जेड ट्रांसफॉर्म सर कंटिन्यू, सर हाँ बोलो, सर जेड ट्रांसफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन के भी निकाल सकते हैं सर, नहीं नहीं नहीं, जेड ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस सिग्नल का ही निकलता है, बल्कि डिस्क्रीट सिग्नल का निकलता है, सिर्फ डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सिग्नल का उसका सिमिलर वे में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जैसे फॉर कंटिन्यूअस सिग्नल we are converting time domain to frequency domain using Laplace transform. In the similar way, in discrete signal, we are converting time domain to frequency domain using a jet transform. In the Laplace transform, using Laplace transform, you can find out the transfer function, that means Laplace transform of output divided by Laplace transform of input. In the similar way, for a discrete LTI system, first we have to convert discrete data into jet transform, then we have to find out the jet transform of output divided by jet transform of input is called pulse transfer function, okay, and yes, the digital control system,
सेम जैसे हम लोग कंटिन्यूस कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पढ़े कि हम लोग का पहले हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म करते हैं, then we have to find the transfer function, then we have to find the stability, then controller design, and then time domain analysis. In the similar way, digital control system, first we have to convert the digital data into jet transform, then using jet transform we have to find out the pulse transfer function. Okay, then we have to find out the region of convergence, or the stability, just like जैसे हम लोग in time domain, that means or continuous time LTI system without service stability criteria, we have to find the stability of the system. So in the similar way, जैसे हम लोग बताए थे कि हम लोग suppose in the time domain, if the poles of the system lie in the left hand side, then system is called stable, or if the poles of the system lie in the right hand side, in the same way discrete control system say that if the poles of the system lie in the unit circle of a jet plane, then system is stable. If the poles lie outside the unit circle of the jet plane, then it's called system unstable. So in the same way, जैसे हम लोग एनालॉग कंट्रोल सिस्टम या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाले, देन वी हैव टू स्टेबिलिटी निकाले, देन कंट्रोलर डिजाइन किए, देन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस किए. इन द सेम वे डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम में हम लोग फर्स्ट डिस्क्रीट डेटा टू जेट ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन जेट ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग उसका स्टेबिलिटी निकालेंगे, कंट्रोलर डिजाइन करेंगे, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ईच एंड एवरी चीज जो भी हम लोग कंटिन्यूस टाइम में किए, सारा का सारा हम लोग इसमें डिस्क्रीट टाइम में भी करेंगे. इज कॉल्ड डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम because the many of the system are based on the discrete data. ऐसा कंप्यूटर में तुम्हारा जो भी है वो डिस्क्रीट डेटा आ जाता है, या बहुत सारा तुम्हारे पास डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग डिस्क्रीट डेटा का यूज करते हैं. तो वहां पर जो सिस्टम होता है वहां पे हम लोग डिस्क्रीट डेटा जो है, जैसे बहुत सारा सिस्टम जो है वो बाइनरी डेटा के ऊपर काम करता है, तो इसलिए हम लोग वहां पर डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम पढ़ के हम लोग उसका दैट मींस स्टेबिलिटी निकालेंगे, उसका क्या कहते हैं, उसका हम लोग स्टेबिलिटी निकालेंगे, उसका कंट्रोलर डिजाइन करेंगे. सो इसीलिए हम लोग कंटिन्यूस टाइम डोमेन में भी पढ़ रहे हैं एंड डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ रहे हैं. ओके, डिस्क्रीट सिस्टम का वन एग्जांपल बताओ. हेलो, हेलो सर डिजिटल क्लॉक सब सर वो सर डिस्क्रीट में आ जाएगा. अभी तुम कंप्यूटर बेस्ड जो भी काम कर रहे हो, सारा का सारा वो डिजिटल डेटा पर ही बेस्ड कर रहा है. सपोज हम यहाँ पर कोई बात बोल रहे हैं, वो उसको रिकॉर्ड करके डिजिटल डेटा में स्टोर करता है, देन उस डिजिटल डेटा से एनालॉग कन्वर्टर लगा के वो हमारे पास साउंड में या हमारे पास जो हम जो बोलते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है. तो इस जो भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है वो सभी का सभी बाइनरी डेटा या डिजिटल डेटा पर ही काम करता है. तो हमारे पास बहुत सारा एग्जांपल है जहां पर हम लोग को डिजिटल डेटा को हैंडल करना पड़ता है. तो उस जगह पे जो हमारा कंट्रोलर होगा वी हैव टू, और जो सिस्टम होगा उसको हम लोग डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम के साथ हैंडल करेंगे. ओके, देयर इज अ मेनी एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम based on the computer or any based on those handle the binary data. Okay, so now, so that means if the small t in time domain, then in capital, then in the small t in the continuous time domain is a time variable, then discrete system small t is replaced by k into t, where k is variable for each and every value of k. That means for k is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, you are getting the discrete data at particular interval of time. Okay, so now if you want to find the jet transform of, hello, any doubt?
Why No, are sir. you using Z transform, and we are going to for the property of Z transform, and why we are replacing small t by the capital K into capital T? Yes, sir. In continuous domain, T is variable, and in discrete time, Kt is variable, where T is fixed and K is variable in its value for 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now we have to discuss, that means we have to find out the Z transform of x t minus n into t. Okay, so where small t is replaced by k into capital T minus nt, where nt is the signal is shifted by the n into t. So then we have to multiply and with the z to the power minus n, and with z to the power, यहाँ पे देखो क्या किए, z to the power माइनस n से मल्टीप्लाई किए इंटू z टू द पावर प्लस n से मल्टीप्लाई किए. तो हमारा जो एक्सप्रेशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड z टू द पावर माइनस 1 को आउट समेशन से बाहर रखें, एंड z टू द पावर प्लस n को इस तरह से यहाँ पे लिख दिए कि z टू द पावर माइनस k बिकम्स z टू द पावर माइनस k ब्रैकेट k माइनस n. एनी प्रॉब्लम? हेलो, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No. Then just like in the definite integral, the variable change, then there is no change in the value of definite integral. Definite integral में पढ़ा है कि अगर variable change हो जाता है तो उसका value में कोई effect नहीं पड़ता है. So in the same way, m is replaced by small k minus n. Then z transform of x t minus nt becomes z to the power minus n, and जहां पर k इक्वल टू 0 था, अब हमारा वेरिएबल जो है वो m हो गया है. सो m स्टार्ट फ्रॉम माइनस n टू इंफिनिटी x mt इंटू z टू द पावर माइनस m. तो हमको पता है कि सिग्नल है 0 मैग्नीट्यूड फॉर अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ t और अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ k, और देन फॉर अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ for m x mt is to have a 0 magnitude, then you say that the z transform of x n minus t minus nt is equal to z to the power minus n. Summation start from m is equal to 0 to infinity x mt z to the power minus m, that is equal to z to the power minus n into xz. So any doubt? Any doubt for right shifting or time delay system? How we have to find out the Z transform of time delay signal? Hello? No, sir. No. So next, how to find out the Z transform of time advancement, or you can say that left shifting signal. Suppose if you want to find a Z transform of x n minus n plus capital T, that means signal जो है वो t इक्वल टू 0 से निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है ना. जो k इक्वल टू 0 से सिग्नल स्टार्ट हो रहा था, अब उसको हम लोग k इक्वल टू माइनस n इंटू टी से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो उसका Z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए that means Z transform is equal to k is equal to 0 to infinity x kt plus nt z to the power minus n. और यहाँ पे हम लोग x to the power n से मल्टीप्लाई किए और x to the power minus n से भी मल्टीप्लाई किए ताकि हमारा एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े. सो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया यहाँ पर, z to the power minus n bracket start summation from k is equal to 0 x kt plus nt into z to the power minus n plus 1. ओके, सो अब ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, जो सिग्नल हमारा लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट जो था वो शिफ्ट हो रहा है. और यहाँ पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए, k इक्वल टू 0 to n minus 1 x kt to z to the power minus 1. ये प्लस
माइनस दोनों कर दिए ताकि एक्सप्रेशन में कोई फर्क हमारा नहीं पड़े। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर के एन प्लस टी सॉरी के एन प्लस एन सॉरी के प्लस एन को अगर हम किसी डेटा से किसी भी क्या कहते हैं m से रिप्लेस करते हैं, सपोज m इज इक्वल टू k प्लस n। हेलो हेलो यस सर, यस सर। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर m इज इक्वल टू k प्लस n करेंगे तो सिग्नल जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस n से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो k इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक है,